Hello dear students, welcome to lecture number 4 of chapter line. In last lecture we have completed up to question number 20 of exercise 1. Now today from question number 21. First of all, I will going to clear you for correction in the second equation of second line. You make correction in your notes. R vector is equal to I vector plus 2j cap plus 3k cap plus mu into I plus 2j plus 2k. Here in your notes it is k vector, make it to 2k vector. Now we know that how to find the angle between two vectors. That if we have to find angle between a vector and b vector, then cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector into magnitude of b vector. And angle between two lines can be found out by using the direction ratios of that lines, and the formula is cos theta is equal to a1a2 plus b1b2 plus c1c2 divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. First of all, we will check the dot product of these two vectors, because these vectors are along the lines. It is 2 into 1 is 2, 2 minus 4 plus 2 means that is 0. 2 into 1, 2, minus 2 into 2, minus 4, 1 into 2, 2, 2 minus 4 plus 2, it is 0, means that two vectors are perpendicular, means that two lines are perpendicular, hence angle between lines is 90 degrees. Okay, it is very clear. First of all, whenever we are going to find angle between lines, first of all check the dot product of that vectors. If it is 0, then angle between lines is 90 degrees. Well, write it. Equation of first line is R vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda into 2I cap minus 2j cap plus k cap. Therefore, we can say that direction ratios of first line are A1 is equal to 2, B1 is equal to minus 2, and C1 is equal to 1. And equation of second line is R vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus mu into I cap plus 2j cap plus 2k cap. Therefore, we can say that direction ratios of second line are, what are the direction ratios? A1 is equal to 1, A2 is equal to 1, B2 is equal to 2, and C2 is equal to 2. Now take the product of these direction ratios. Therefore, A1A2 plus B1B2 plus C1C2 is equal to A1 is 2, 2 into 1 plus minus 2 into 2 and plus 1 into 2, that is equal to 2 minus 4 plus 2, that is equal to 0, means we have A1A2 plus B1B2 plus C1C2 is equal to 0. It means we can say that lines are perpendicular to each other. Therefore, angle between them is 90 degree. Angle is 90 degree. Okay, please note down the solution of question number 21. Now, look at for question number 22. Find the coordinates of the point on the line x plus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z plus 3 upon 6, which are at a distance from the base, at a distance of 3 units, which are at 3 unit distance, which are at 3 unit distance from the base point minus 1, 2, 3. 3 यूनिट डिस्टेंस का हमें पॉइंट निकालना है. तो
हमें एक फॉर्मूला याद होगा, जब थ्योरी पार्ट हमने लिया था कि किसी भी लाइन पर एक पॉइंट दिया है और उसके एट अ सम डिस्टेंस r पे अगर पॉइंट हमें निकालना है तो हमें पहले उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ते हैं, which are denoted by LMN, and that distance is denoted by R or D. Then we'll write the point coordinates of that point. Required points are x1 plus or minus LR, y1 plus or minus MR, and z1 plus or minus NR. And if you denote that distance by D, then we write it as x1 plus or minus D, LD, y1 plus or minus MD, and z1 plus or minus ND. Okay, using that formula. Now first of all, we'll find the direction ratios of the line. Then we'll find the direction cosines of line. Base point के coordinates हमें पता है और फिर हमें distance d भी पता है, तो हम find करते हैं. Now look at this. Given equation of line is x plus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z plus 3 upon 6. Therefore, direction ratios of line R A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 6. Therefore, under root of a square plus b square plus c square. To find the direction cosines, we must have to find the value of under root of a square plus b square plus c square. That is under root of 2 square is 4 plus 9 plus 36. That is equal to root of 49, and root 49 is nothing but 7. Therefore, direction cosines of line R, L is equal to 2 upon 7, M is equal to 3 upon 7, and N is equal to 6 upon 7. These are the values of L, M, N. Now coordinates of base point, are minus 1, 2, minus 3, minus 1, 2, minus 3, and distance D is equal to given 3. Distance D क्या given है? 3 है. Now coordinates of required points. रिक्वायर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आर x is equal to x1 plus or minus LD, y is equal to y1 plus or minus MD, and z is equal to z1 plus or minus nd. इसमें values लिखने के हैं. These are the values of L, M, N. These are the values of x1, y1, z1, and this is distance d. Therefore, we can say that x is equal to x1 is minus 1, x1 is minus 1, that point, plus or minus value of L is 2 by 7 into D is 3,
y is equal to y1 means 2 plus or minus m is 3 by 7 into d is 3 and z is equal to z1 means minus 3 plus or minus 6 by 7 into 3. Therefore, x is equal to minus 1 plus or minus 6 by 7, y is equal to 2 plus or minus 9 by 7, z is equal to minus 3 plus or minus 18 by 7. तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. Therefore, we can say that P has coordinates. एक पॉइंट लिया P, तो इसमें के प्लस के तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे. -1 plus 6 by 7, 2 plus 9 by 7 and -3 plus 18 by 7. And Q has coordinates. Another point Q has coordinates. -1 minus 6 by 7, 2 minus 9 by 7 and -3 minus 18 by 7. Therefore, P has coordinates. Now take cross multiplication. -7 plus 6 is -1 by 7. This 14 plus 9, 23 by 7. And -21 plus 18 is -3 by 7. And Q has coordinates. -13 by 7, comma 14 by 7. 14 minus 9 is 5 by 7. And -21 minus 18 is -39 by 7. Keep it as it is, or according to your answer, we can write it in integer fraction also. This -1 by 7 as it is, comma, it is 3 integer 2 by 7 and -3 by 7. And it is Q has coordinates -1 integer 6 by 7, comma 5 by 7 and -5 integer 4 by 7. These are 2 points which are at a distance of 3 units from the given point. तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए. अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म होती है. इसके आगे हमें कुछ थ्योरी पार्ट सीखना है जिसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, what are the skew lines, what is the shortest distance between two skew lines, and how to find distance between two parallel lines in a space. Okay, तो इतना आप नोट कर लीजिए. आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं. Now, after completion of exercise 1, we are going to find the formula to find the distance of a point from the line. कोई भी एक point given है और one line which is not passing through that point is given, then to find distance of the point from the line, we are going to study this formula. The length of perpendicular drawn from a point P with position vector alpha vector from the line r vector is equal to a vector plus lambda into b vector is given by Pm is equal to under root of magnitude of alpha vector minus a vector whole square minus alpha vector minus a vector dot b vector upon magnitude of b vector whole square. Now look at this. Here given point, let P with position vector alpha vector be any point in a space and r vector is equal to a vector plus lambda into b vector be any line
not passing through A, not passing through P. Okay. Now, therefore, we can say that point on the line, point on line is A with position vector A vector, and line is parallel to B vector. Agar R vector is equal to A vector plus lambda into B vector, this is the equation of line, then the point on the line is A and this line is parallel to B vector. B vector ko ye parallel hai. Now we are going to find this distance PM, means we must have to draw the PM perpendicular. It is draw PM perpendicular to the line. R vector is equal to A vector plus lambda into B vector. तो PM हमें find करनी है. Now here this is the formation of triangle PMA. Triangle PMA फॉर्म हुआ है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है PM. PM डिस्टेंस, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम से PA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर इज नथिंग बट PM स्क्वायर, तो ये हमें यूज करना है, इसलिए हमें AM निकालना है. व्हाट इज AM? AM is nothing but projection of this AP vector on this B vector, because AM is parallel to B vector. Now here we can write AM is projection of AM AP vector on B vector. Therefore we can say that AM is equal to AP vector dot B vector upon magnitude of B vector. लेकिन AP वेक्टर का P का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर है और A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, तो AP वेक्टर therefore AM can be written as alpha vector minus A vector dot B vector upon magnitude of B vector. This is the length of AM. आपको प्रोजेक्शन तो पता है, दिस AP वेक्टर का B वेक्टर पे प्रोजेक्शन. B वेक्टर पे क्यों बोला है? क्योंकि AM is parallel to B वेक्टर. ठीक है, here we can write since, यहाँ पे रीजन हम लिख सकते हैं AM is parallel to B वेक्टर. AM किसको? B वेक्टर को पैरेलल है, इसलिए AM फैक्टर भी लिखा तो चलेगा. Now in triangle PMA, angle M is equal to 90 degree. Therefore we can say that AP square is equal to PM square plus AM square. लेकिन हमें निकालना है PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर. Therefore we have PM is equal to under root of AP square minus AM square. But what is AP? It is nothing but under root of AP means length of AP, and length of AP is magnitude of AP vector. AP vector is alpha vector minus A vector, means we can say that it is magnitude of alpha vector minus A vector whole square, and minus this AM square is nothing but alpha vector minus A vector dot B vector upon magnitude of B vector whole square. In this way we can say that
the length of perpendicular drawn from any point to the line is given by this formula. Pm is equal to magnitude of alpha vector minus a vector whole square minus alpha vector minus a vector dot b vector upon magnitude of b vector whole square. ये हो गया वेक्टर फॉर्म टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन. अगर हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो नोट डाउन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P with coordinates x1, y1, z1 from, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे a, b, c, a, b, c from the line x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon m, where L, M, N are the direction cosines of the line, is given by under root of यहाँ पे आएगा a minus x1 होल स्क्वायर प्लस बेस पॉइंट यहाँ पे क्या है x1, y1, z1 ये बेस पॉइंट है और p के कोऑर्डिनेट abc. डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो a माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस c माइनस x3 होल स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट और माइनस अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है. Now b vector upon magnitude of b vector is nothing but unit vector along b vector. इसीलिए हमने इसके जो लाइन L के instead of direction ratios we have taken here direction cosines because b vector upon magnitude of b vector it will give us the unit vector along that line or parallel to that line, means element are nothing but direction cosines. Now alpha vector minus a vector is a minus x1, means it is a minus x1 into L plus b minus x2 into m plus c minus x3 into ये x1 y1 z1 है तो ये आएगा y1 ये आएगा z1 into n whole square. This is formula to find distance of point from any line when the coordinates of the point and equation of line is given in Cartesian form. तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ये फॉर्मूला याद करो, ये हमें एग्जांपल्स में काम में आएगा. ठीक है, राइट ऑन प्लीज. तो चलो बच्चों आगे का कंसेप्ट सीखते हैं. आफ्टर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन वी आर गोइंग टू स्टडी टू स्क्यू लाइन्स. ये स्क्यू लाइन्स क्या होते हैं? देयर आर सो मेनी पेयर्स ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन और इन अ स्पेस. जब हम प्लेन में लाइन स्टडी करते थे तो लाइन के बारे में एक ही कंसेप्ट सीखा था कि लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. क्योंकि दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, या तो वो पैरेलल हो सकते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले होते हैं. इसके सिवा कोई भी दो लाइंस के बीच में रिलेशन नहीं होता. लेकिन जब लाइन एक स्पेस में लेते हैं तो देयर आर थर्ड टाइप ऑफ लाइंस. एक पैरेलल तो होती है जो एक दूसरे को कभी एक ही प्लेन में है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. दैट आर द पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जांपल look at these two lines which are parallel to each other. These are two lines which are parallel to each other. Exactly one plane can pass through these two lines. ठीक है. Then अगर ये लाइन को मैं ऐसे रोटेट करता हूं, देखिए. Now again these two lines
do not parallel to each other means there is no one plane passing through these two lines. आप अगर इसको इमेजिन कर सकते हो तो देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको. These two lines do not intersect each other. अगर ये लाइन को मैं ऐसे बढ़ाता हूं और इसको भी बढ़ाता हूं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और ये जो कि ये एक ही प्लेन इसमें से पास नहीं हो सकता, यानी ये पैरेलल भी नहीं है. अब ये दो लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, then that two lines are said to be skew lines. इस प्रकार के जो दो लाइंस है, that two lines are said to be skew lines. Are you clear about it? ये मैंने आपके लिए खास तैयार किया है. और अब अगर मुझे इन दो लाइंस, जो दो स्क्यू लाइंस है, इन दो लाइंस में का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये जो दो लाइंस है, इन दो लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ लुक एट दिस थर्ड लाइन which is perpendicular to both this line as well as this line. किसी भी लाइन का एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पे से इस लाइन को परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यानी ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दैट टू लाइंस, दैट इज सेड टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. अब इसको मुझे फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. जब मुझे फाइंड करना है तो इसके लिए मुझे ये सेगमेंट PQ निकालना है. देखिए यहां पे दो लाइन लिए, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा इंटू b1. ये b1 वेक्टर है. दिस लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b1 वेक्टर. और दूसरी लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b2 वेक्टर. ये कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए हमने ये किया है. यहां पे this b1 vector is parallel to first line and this b2 vector is parallel to this second line. second line को parallel ये b2 vector है. समझ में आ रहा है? तो ये सेगमेंट PQ लिया हमने which is said to be shortest distance, यानी perpendicular to these two lines. अब देखिए, अब इसमें ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, जो ऊपर वाली लाइन कहेंगे हम, that is r vector is equal to a1 into lambda. तो a1 पॉइंट कहां पर, तो भी यहां पे होगा. ए पॉइंट लाइन पे का A1 पॉइंट यहां पे होगा, जिसे हमने A से डिनोट किया है A वेक्टर, यहां पे होगा कहीं तो भी. और दूसरे लाइन का जो B पॉइंट है, जिसको R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्बडा इंटू B2 कहा है, वो यहां पे होगा. जब ये सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं तो यहां से ये डाला हुआ परपेंडिकुलर और यहां से डाला हुआ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये A और B से हमने इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए. जैसे मैं दूसरी फिगर निकालता हूं इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने ये A पॉइंट यहां पे लिया और ये B पॉइंट यहां पे लिया. A विथ पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर और B विथ पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर. ये सेगमेंट AB हो गई आपके, ये सेगमेंट AB. और इस पे से हमने क्या किया है, ये जो PQ वेक्टर है, अब देखिए PQ वेक्टर है क्या, दिस PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस L1 एंड L2. दोनों लाइंस को ये परपेंडिकुलर है. और इस लाइन को पैरेलल है वेक्टर B1, इस लाइन को पैरेलल है B2, यानी PQ इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू B1 एज वेल एज B2. और B1 और B2 दोनों को अगर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि PQ वेक्टर इज नथिंग बट पैरेलल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. B1 और B2 वेक्टर को ये पैरेलल होगा, कौन, PQ होगा. किसको, B1 क्रॉस B2 को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स. तो B1 और B2 को परपेंडिकुलर होगा B1 क्रॉस B2, और PQ ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है B1 और B2 को, यानी हम कहते हैं कि PQ वेक्टर और B1 क्रॉस B2 ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो PQ वेक्टर कैन बी रिटन एज सम लैम्बडा और सम कांस्टेंट K इनटू B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि PQ वेक्टर इज लाई अलोंग B1 क्रॉस B2. तो PQ कहां पे होगा, जैसे A से परपेंडिकुलर डाला है यहां पर, A से परपेंडिकुलर डाला है P पर और B से परपेंडिकुलर डाला है Q पर. और ये जो लाइन है तुम्हारी, ये लाइन होगी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर.
इस पर ही एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो दिस PQ इज सेड टू बी, PQ ये क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड इट इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या होगा? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ AB vector on B1 cross B2. B1 vector cross B2 vector. This is along this PQ. तो a projection of AB vector on B1 cross BQ is nothing but PQ vector. ये PQ होगा, PQ vector नहीं, PQ length of PQ which is said to be shortest distance. तो projection कैसे निकालते हैं? Therefore PQ can be written as PQ is equal to projection of AB vector, means it is AB vector dot B1 vector cross B2 vector divided by magnitude of B1 vector cross B2 vector. तो therefore PQ is equal to आएगा, PQ is equal to, PQ ये डिस्टेंस है, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको मॉड में लिखेंगे हम, मॉड ऑफ AB वेक्टर डॉट, AB वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? AB वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर, मींस इट इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर divided by magnitude of B1 vector cross B2 vector. Now look at this. This numerator contains dot product as well as cross product. और जो प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस दोनों होते हैं, इनको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इज नथिंग बट बॉक्स B1 वेक्टर, B2 वेक्टर and this A2 minus A1 vector, A2 minus A1 vector divided by, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, divided by magnitude of B1 vector cross B2 vector. This is said to be shortest distance between two skew lines. दो skew lines में जो distance find करना है, shortest distance, वो find करने के लिए ये फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले की प्रूफ आपके नोट्स में दी है, उसको अच्छे से लिख के निकालिए, कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए. मैं फिर से एक बार मैंने जो डायग्राम निकाली है, जो आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया है, वो दिखाता हूं कि स्क्यू लाइंस कैसे होते हैं. ये आप इसका डायरेक्शन देख सकते हो. जो दो लाइंस है जो दे आर नॉट पैरेलल एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इन दो लाइंस को कहेंगे हम स्क्यू लाइंस. इस इनमें ये जो है दैट इज सेड टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये P पॉइंट हो गया आपका, ये Q पॉइंट हो गया. इस पे जब हम एक पॉइंट निकालते हैं, इसको जब हम ऐसा ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इधर जब ज्वाइन करेंगे तो ये AB वेक्टर हो जाएगा. दैट AB वेक्टर, जैसे मैं इसको ऐसे लिख करता हूं और इसको मैच करता हूं, तो इस पे का पॉइंट लिया A और इस पे का पॉइंट लिया B. जैसे A पॉइंट यहां पे लिया और B पॉइंट यहां पे लिया, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, इस पे यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है. तो PQ is said to be projection of AB vector on PQ. ठीक है. अब B वेक्टर तुम्हारा कैसा होगा? ये B1 वेक्टर एक लाइन को पैरेलल, इसको पैरेलल होगा B1 वेक्टर और इसको पैरेलल होगा B2 वेक्टर. इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर लाइन, यानी इसको परपेंडिकुलर लाइन, इसलिए इसको B1 क्रॉस B2 लिखा है. समझ में आया? तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और इसकी जो प्रूफ है वो अच्छे से निकाल के लीजिए. अब जब यही दो इक्वेशंस हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन. And another line is given x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z1 upon c2. तो पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके x1 y1 z1. पॉइंट B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2 z2. तो ये जो AB वेक्टर है,
ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये a2 माइनस a1। और b1 b2 क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर आएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b2 वेक्टर जो आएगा वो आएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्ड बाय देयर डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ, ये जो ऊपर वाला है जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसको डिटरमिनेंट से निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसको टेक्स्ट बुक में आप फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे आएगा a1 b1 c1, यहाँ पे आएगा a2 b2 c2, ये डिटरमिनेंट। और इसको डिवाइडेड बाय आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इस यहाँ पे i j k लिख के, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो अंडर रूट ऑफ आएगा a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर। इन तीनों की जब हम एडिशन करेंगे, स्क्वायर करके एडिशन, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो दिस फॉर्मूला इज, इसको लिखेंगे मॉड में। तो दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 upon under root of this term। और ये अगर डिस्टेंस जीरो होता है, दो लाइंस में का डिस्टेंस जब जीरो हो जाता है, तो दैट टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पे ये जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो लिखा, तो ये क्या बन जाएगा फिर, इसको अगर जीरो लिखते हैं तो ये बन जाएगा, ये टोटल टर्म जो डिनोमिनेटर की है इधर मल्टीप्लिकेशन में जीरो हो जाएगी, तो आपको कंडीशन मिलेगी डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिस a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इज इक्वल टू जीरो। यानी इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो हम इसे यूज करते हैं एज अ कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, or that two lines are intersecting each other। ठीक है, और we can say that when two lines are intersecting they are coplanar lines। Then remember that two skew lines are always non-coplanar and two lines are coplanar if the value of this determinant is zero। वहां पे x1 y1 z1 is a point on first line, x2 y2 z2 is point on second line, a1 b1 c1 are the direction ratios of first line and a2 b2 c2 are direction ratios of second line। तो यहाँ पे ये स्क्यू लाइंस का जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, कल सीखेंगे हम हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।